Sir, may I come in? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठा कर दो. बैठ जाओ. Thank you, sir. Okay, Gaurav, please introduce yourself. Sir, before introducing myself, I want to thank these respected people for giving me an opportunity to stand here. Sir, my name is Gaurav and I am from Delhi. I have 6 members family. Apart from me and my parents, I have my grandfather and 2 younger brothers. Coming to my scholastic educations, recently I am doing a graduation from School of Open Learning. I had done my diploma in education from Madhya Pradesh board. I had cleared my CTET exam thrice and I had done my schooling from CBSE board. Talking about my hobbies, I love to listening music, love to play cricket and gardening, and also love to dance while listening the music. Talking about my strengths, I am a hardworking and a dedicated person to my work. The one motive I used to be in my life that I never give up in any kind of situations in my life. I am a dream lover boy. I love to fulfill my dreams. As I am able to see the dreams, then I will. You said you don't give up. Can you give an example of a situation where you are in a difficult situation, but you didn't give up? Sir, I want to share here my personal experience that in my lifetime, in last my 8 to 9 years, I want to become a CA. As you will see that I had done my 12th class from commerce stream. But at that point, the financial condition of my family was so poor, so that I have to give that my dream. And now I started teaching students to support my father economically. From that point, from last 8 to 9 years, then I had decided to become a teacher, and now I am here in front of you. Okay, that's great. And you have written you are a learner. Yes, sir. Now you are here for a job. How can you say that you are a learner and not a teacher? Sir, I think so. Before to become a good teacher, I have to become a good learner. I am just not a teacher. I am just a facilitator and a guidelines to the students. I can guide them to achieve a bright future of them. If I cannot learn from something new from my students, then I will not able to become a good teacher. So before that, I have to become a good learner. Okay, that's also great. You love to enjoy company of every age group. Yes, sir. And you like to take responsibility. Yes, sir. तो स्कूल में आप क्या-क्या responsibilities handle कर सकते हो as a teacher? Sir, as a teacher, I can handle the responsibility of the students, and I can also handle the responsibilities which was given by the Kendriya Vidyalaya Sangathan to me, that I can teach and facilitate the students to their bright future, and I can also take the responsibilities from my colleagues and the principals which they will give to me, and I can honestly play that responsibilities. Okay, that's also very good. So, why do you want to become a primary teacher and not a teacher at higher level? Sir, the experience of my last 7 years of teaching, I am much attached with the students of primary classes because of their calmness and because of their love and because of their smiles on their face. And the one best thing is that if the foundation of the education system is based on the primary teachers, if the foundation of that students will be strong, then they can build a bright future. And also, sir, I thought we can prove that good building can be developed on data land which has a strong foundation. Very good. So, what will you do to build that foundation strong? Sir, I will teach just like a way that the students will imagine and become creative. I don't increase the rote memorization in the students level. I can use the method from concrete to abstract, so that the knowledge in their mind will be strongly displaced in the student and the mind of the students. Okay, but special strategies will you use to do that? Sir, I will, in teaching, I use various kinds of styles, just like storytelling and poem telling, and I can use concrete objects just like using flashcards while teaching, and audio visual aids and information technologies in various kinds of software while teaching. Okay, great. So, can you show us your teaching skills? Have you prepared any topic to show us how good you are in your teaching? Yes, sir. Of course, I can. Okay, so please chair side करो. मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा के दिखाओ जिसमें आपके
Sir, which one? If you Mathematics, कोई भी topic anyone. Sir, I can here teach the students the pattern and also the addition with carry. Okay, please Sir, I will start with the pattern. start करो. Okay, students. Good morning, students. Good morning. Today is we are going to teach. Sorry, we are going to explore a new basic in the mathematics. So, do you want to learn this music? Okay, let's start. I am going to tell you a story about a village. The name of the village is Dholpur. And do you know about the Dholpur? Okay, Dholpur. कौन कौन रहता है धौलपुर में? धौलपुर में रहता है भीम और भीम के दोस्त. So the story is that धौलपुर में भीम और भीम के दोस्त रहते थे. तो एक दिन उनके गांव में एक आया बैड मैजिशियन और वो बैड मैजिशियन आकर उनके भीम के दोस्तों को उठाकर ले गया. एंड भीम के दोस्तों के नाम क्या थे? बताओगे मुझे? यस, बताओ. यस, राजू. ओके, बताओ. चुटकी और कालिया. गुड. एक और जग्गू. ठीक. These are the friends of छोटा भीम and छोटा भीम is our savior, जो अपने दोस्तों को मुसीबत से बचाता है एंड गांव को भी मुसीबत से बचाता है. सो बैड मैजिशियन जो है आया एंड छोटा भीम के दोस्तों को उठाकर जंगल में ले गया एंड जंगल में ले जाकर उसने कर दिया उन सबको एक पिंजरे में बंद. एंड पिंजरे में बंद कर दिया. अब छोटा भीम की हेल्प करने के लिए तो उनके दोस्त थे, लेकिन अब उसके दोस्त तो पिंजरे में बंद हो गए हैं. तो छोटा भीम की हेल्प कौन करेगा? छोटा भीम की हेल्प करेंगे यस हमारी क्लास के बच्चे. नाउ I am going to divide my class in 4 sections. This is section A, this is section B, C and D. Section A बचाएगी राजू को, section B बचाएगी चुटकी को, and section C कालिया, and section D this part D will बचाएगी जग्गू को. So छोटा भीम गया जंगल में एंड जंगल में जाकर उसने देखा कि मेरे चारों दोस्त पिंजरे में बंद हैं. अब पिंजरे को कैसे खोला जाए? क्योंकि पिंजरे के पास ना तो ताला है ना कुछ है. पिंजरे के वहां पर लगा हुआ है एक पासवर्ड एंड उस पासवर्ड को पहचानने के बाद, पता करने के बाद पिंजरा खुल जाएगा. सो अब देखते हैं हम पासवर्ड क्या रखा है. राजू के पासवर्ड के वहां पर लिखा है दिस वन. ये पासवर्ड रखा है. चुटकी के क्या लिखा है? चुटकी के यहां पर लिखा है दिस वन. कालिया के वहां पर पासवर्ड क्या लिखा है? व्हाट इज दिस बच्चों? यस, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज सर्कल. गुड. एंड दिस इज यस ट्रायंगल एंड दिस इज वंस अगेन स्क्वायर. एंड जग्गू के वहां पर क्या लिखा है? जग्गू के वहां पर लिखा है रेड ग्रीन सो नाउ हमारी पार्ट ए बताएगी कि वहां पर क्या आएगा. यस 25 देन 30. गुड. यस हमने राजू को बचा लिया. हमारी टीम ने राजू एक में बचा लिया. यस सेक्शन बी पार्ट बी. ओके. अब यहाँ क्या आएगा? यस टी ए. गुड. यस सी. तो इस तरह से आप पैटर्न बच्चों को पढ़ाओगे. यस सर. बच्चों को पैटर्न क्यों पढ़ाना चाहिए?
सर पैटर्न इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि इन डेली लाइफ प्लेस में दे कैन सी मेनी टाइप्स ऑफ पैटर्न्स इन वेरियस कंडीशंस, जस्ट लाइक give an example sir of pattern examples daily life. like that ke they can see the various patterns in the clothes, in the sarees of their mothers and also in the house as tiles वगैरह जो walls पर लगी होती है वो patterns में यूज होती हैं. So that's why I can introduce pattern to the grade class. That's great. Also, can you teach a topic of EVS using a poem? Yes sir, I can. Please do. So may I run this? Sure. Students, today I am going to tell you a story. एक स्टोरी एक ऐसे गांव की जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीज. एंड उस मैंने भी क्या बताया, उस गांव का नाम क्या है? यस, हेल्थ एंड, द नाम है गांव का हेल्थ एंड डिजीज, इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ डिजीज भी रहा करती थी. अब इस हेल्थ एंड डिजीज के गांव में दो घर थे. वहां पर दो घर थे वहां पर. यस, every students draw this type of house in their copies. I will check. ठीक है, पोएम करके दिखाओ, अपने ड्रॉ कर दियो. Yes sir. So this is the story of I will tell them about the health and disease, and this is the house of healthy foods. I name this balanced diet and I will name this junk food. After that I can tell him about the importance of the healthy foods and the junk food. This type of story I can narrate them that how is junk food is harmful to our body and how is the balanced diet is good for us. Sir, I can stop here story. I can no story छोड़ दो और पोएम करके दिखाओ. Okay. And sir, I had prepared a poem. Students, we are going to narrate a poem and आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे. लेकिन उससे पहले पोएम जिसके बारे में है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताओगे कि वो पोएम किस चीज़ के बारे में है. जंगल में क्या रहते हैं? हाँ, जंगल में रहते हैं जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स. और उस जंगल में एक ऐसा जानवर रहता है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत मोटा होता है, जिसकी एक लंबी सी सूंड होती है. हाँ, क्या नाम है उसका? यस, हाथी. हाथी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस, गुड, एलिफेंट. चलो अब हम चलते हैं एलिफेंट के ऊपर एक कविता पढ़ते हैं. आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलना एंड मैं जैसे जैसे करूंगा मेरे एक्शन को भी कॉपी करना. ओके, स्टार्ट. ठुमक ठुमक कर आया हाथी, सूंड में भरकर लाया पानी, जो ही उसने उल्टा पानी, बरखा आ गई बड़ी सुहानी, जो ही बरसा पानी, सब बच्चों को याद आई नानी, बच्चों ने मिल नाव बनाई, ताल तलैया में खूब चलाई. यस, आप सब नाव चलाते हो ना जब बारिश आती है. अब और क्या होता है बारिश में? अब देखो आगे क्या होता है. खेत खलियानों में छाई हरियाली, ताल तलैया में भर गया पानी. गुड. अब बारिश आने के बाद कौन नाचता है? यस, बारिश आने के बाद मोर नाचता है. मोर नाचा झूम झूम कर. अच्छा, कोयल ने भी कूक लगाई. कैसे लगाई कूक? कू कू कू. हाँ, अब हो गई. अब चाहोगे कि दोबारा से हाथी राजा फिर से आए? यस, चलो चलते हैं आगे. हाथी राजा फिर से आना. अभी बताओ इस पोएम से आप क्या क्या सिखा सकते हो बच्चों को? Sir, by using this activity, I can tell them students that draw a elephant in their copy. This is by this I can develop the drawing skills in the students and they can enjoy this activity. After that, I can tell them to write a few lines about the elephant in English and Hindi both. By this, they can develop the language skills
and after this exercise I can tell them about the rainy season, and in rainy season you can enjoy that in बाग बगीचों में हरियाली छाई जाती है and बच्चे उसको enjoy करते हैं. What are the other methods that you can use to teach primary students? Sir, besides of stories and poetry, what are the other methods that you can use? Sir, the other methods I will use that the playway method, and while out of the class I can tell them to observe the things about their environment and आसपास की जो भी things होगी मैं उनको observe करने के लिए बोलूँगा, and observe करने के बाद I can tell them to write about the things जो भी आप सब लोगों ने observe करा उसके बारे में मैं पहले उनसे क्लास में डिस्कस करूँगा, and मैं इस चीज़ को ये भी फोकस करूँगा कि every students will tell about what they did observe. Very good, that's great. So you may go. ये लो आपका बायोडाटा बोर्ड रब कर देना, ठीक है? Thank you sir.